Hello guys, my name is Lalit Singh Mehta and today I am going to explain you about the concept of stress and strain. The medium of instruction for my lecture will be both English and Hindi so that everyone can understand easily. So before going into stress and strain, हमने लास्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा है सब्जेक्ट एंड दिस सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे, लेट्स सी दैट. सो इन द लास्ट सेमेस्टर वी लर्न अबाउट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स was all about forces and its nature. So last semester में I am talking about Mumbai University basically. So engineering mechanics was there. उसमें हमने forces और उसके nature में बारे में पढ़ा. Like how to resolve the forces, composition of forces, what are the different types of forces, what are the nature of forces. Force can be compressive, tensile, etc. etc. So यहाँ पर basically static and dynamics में engineering mechanics divided था, because it was all about forces. But now we have a subject known as strength of materials SOM. So this stress and strain जो अब आज हम देखने वाले हैं, it is a part of strength of materials. SOM का part है. Basically it is the module 1 of stress and strain. तो इसमें हम देखेंगे effect of force on body and how the body behaves under this force or load. So this is the basic difference between SOM and engineering mechanics. Engineering mechanics में सिर्फ forces and its nature के बारे में पढ़ा. Strength of material, you will see the effect of force on body and how the body behaves under this force of load. So this strength of material is sometimes also known as mechanics of solids or solid mechanics. So आप नाम से ही यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं कि आपने फर्स्ट सेम में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा है और दिस सेम करंट सेम में आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ेंगे. विच जो आज का टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वो हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेट करता है. सो नाउ लेट्स गो इनटू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. So whenever there is a body and some force or load is being applied in this body, then stress is produced and simultaneously strain is produced. So एक बॉडी के ऊपर जब फोर्स या दबाव पड़ता है तो बॉडी स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है और स्ट्रेन प्रोड्यूस करती है साइमल्टेनियसली, विच इज आवर टॉपिक. सो स्ट्रेस और स्ट्रेन आज का जो टॉपिक है, हमको यही देखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. सो बाय डेफिनेशन इफ वी गो, स्ट्रेस इज द इंटरनल resistive force to deformation per unit cross section area. So if we go by the technical definition of stress, stress क्या है? Stress is the internal resistive force to deformation per unit cross section area. अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ अ फ्री बॉडी डायग्राम.
Now suppose there is a body which is under load, which is under tensile load, you can say P. So now we can see ये जो P है, ये जो external load है, वो हमारी बॉडी का डिफॉर्मेशन, बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, करेक्ट? बिकॉज द लोड इज बीइंग अप्लाइड हियर. सपोज दिस इज द बॉडी एंड आई एम गोइंग टू एक्सटेंड इट, सो ये बॉडी डिफॉर्म होने से रोके अपने आप को. सो ये बॉडी के अंदर की ताकत है. दिस इज द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स ऑफ दिस बॉडी विच इज अपोजिंग दिस P, वी कैन से एक्सटर्नल लोड. सो वही है, स्ट्रेस इज नथिंग बट इट इज द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो ये एक्सटर्नल लोड से लड़ेगा. एंड दिस इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स कैन नॉट बी सीन, ये हम देख नहीं सकते, बट दिस कैन बी कैलकुलेटेड. दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज सच. स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय sigma. So sigma, which is stress, is equal to load or force upon area. So this is the mathematical relation for stress. Stress is load by area. So ये body जो है, जो कि ये external load को resist कर रही है, ये इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स कितना है ये बॉडी का, वो जानने के लिए आई कैन यूज दिस फॉर्मूला, करेक्ट? नाउ लोड और फोर्स इन दिस फिगर इज गिवन बाय P एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कैन बी written in terms of A. So stress is basically P by A, correct? Now if I draw one 3D diagram for you and try to explain. Suppose this is the body which I have drawn here, FBD. Now this is the 3D figure. Now suppose this is the width, this is the depth, and this is the length of the body. So how we can calculate the stress for this body, कि ये कितना स्ट्रेस ले सकता है बॉडी. सो सिग्मा इज इक्वल टू P by A, करेक्ट? हियर वी हैव सीन. सो दिस इज द P. P is the external load, external tensile load which is being applied on the body. So sigma is equal to P, and area here will be cross sectional area. So this will be the area on which the force is acting, this area. So area is B into D, width into depth, correct? So in this way we can calculate the value of stress, कि under the action of this external load ये body कितना stress ले सकता है. If I want to go with another diagram, suppose there is a cylindrical rod undergoing some external load and the length of this rod is L. So again I can find the sigma for this rod as P by A. P is the external load and A will be, since it is a circular cross section, so pi by 4 D square. So in this way we can find the value of stress for a body. Now what is the importance of this sigma is that we can calculate how much load this body or any structure can withstand. तो इसलिए ये बहुत important हो जाता है हमारे लिए to learn about stress. Now this is all about stress. Now we can see strain. Strain, technically speaking, is denoted by small e, which is equal to change in length upon original length. So a body, when a body is withstanding some stress, so simultaneously strain is also produced.
So strain is a parameter which gives the indication about change in size or shape. Because your body एक्सटर्नल लोड इज बीइंग अप्लाइड, तो कुछ चेंजेस आएगा ये बॉडी में, करेक्ट. तो ये क्या चेंज है, ये पैरामीटर को जानने के लिए साइमल्टेनियसली स्ट्रेन इज बीइंग कैलकुलेटेड. इफ आई ड्रॉ द फ्रंट व्यू फॉर दिस, you can see again this is the same diagram, front view. So we can see under the application of this external load P, this is L, original length. So this length now which is being extended will be delta L. So we can produce stress and simultaneously on the body the strain is also produced. So E here will be delta L upon L. So delta L is nothing but change in length divided by original length. So E is equal to delta L by L. So delta L, change in length, is given in meters and L is also again given in meters. So E is having no unit and it is a ratio, correct? Similarly, I can find the unit for sigma also. Sigma is equal to P by A. So load or force is given in newtons, area is given in meter square. So unit for stress is Newton per meter square. 1 Newton per meter square is equal to 1 Pascal. So अगेन क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव लर्न टुडे. हमने देखा कि फर्स्ट ईयर में हमने मैकेनिक्स पढ़ा, सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर मुंबई यूनिवर्सिटी वी विल लर्न अबाउट सॉम. सॉम में जो पहला मॉड्यूल है विच इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. स्ट्रेस इज नथिंग बट व्हेन अ फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन अ बॉडी देयर इज सम internal resistive force which is being applied by the body to this external load, which is sigma is equal to P by A. We can calculate it like this. And simultaneously when the load, external load, is applied, so there will be some change in size and shape. So this change in size and shape can be determined in terms of a quantity called as strain. Strain is nothing but change in length by original length. So here we can see this is the 3D diagram, this is the front view. So P, load is being applied, actual load, and under the action of this actual load this length gets increased, correct, by a quantity, whatever the quantity may be. So L, delta L, change in length, original length. So change in length by original length gives a strain. So with the help of this two parameters we can easily go into the first module of stress and strain. Hope you like this. In the next lecture we will move ahead with another topic. Thank you.